Good morning, children. Today your EVS teacher Mrs. Sujata welcome you back to our EVS online class. So children, in last class what we have discussed, just you memorize. We have discussed about the natural resources, okay, and how the natural resources, how the natural thing created by their own, okay, and what are the man-made thing and what are the natural thing, and how should we take care of the natural thing, that also we have discussed, okay. So children, we have discussed about the air, okay, air and their uses and how the air pollution become and what are the measures to control or prevent from the air pollution. So these are the things which we discussed in the last class. So today children, we are going to learn and we are going to read about the water, okay. So before that, just I would like to tell, see, from vehicle, from the factories, from the chimneys, okay, so bad smokes are coming, yes or no, coming out from the factories, okay. So they are mixing in the atmosphere or in the air, okay, which causes the air pollution. To avoid this, we should not throw garbage in the open area. This like the children, we are throwing the garbage also in the open area, yes or no, just we are using the things and we are throwing the garbage in the open area only. So it also the reason to become a air pollution, okay. So what are the measures to control the air pollution? Yes, we should avoid this. We should not throw garbage in the open area also, and factory waste should be disposed to far off places so that it does not pollute the air, okay. जो फैक्ट्रीज का जो गंदगी निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है ना, उसको हम लोग को क्या करना है, बहुत दूर फार एरिया जहाँ लोग निवास नहीं करते हैं, ओके, जहाँ लोग निवास करते हैं वो एरिया से बहुत दूर, ओके, वहाँ हमको फेंकना चाहिए, ओके. एंड कटिंग ऑफ ट्रीज ऑल्सो वी शुड अवॉइड, ओके, हमको अवॉइड करना चाहिए ट्रीज कटिंग करने के लिए, बल्कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ओके. सो कटिंग ट्रीज वी शुड बी स्टॉप्ड एंड वी शुड plant more trees in order to get clean air, okay, for our breathing process, okay children. So let's come to water. See here, water is one of the basic need of life, because water only is our life. Without air and without water we can't live, okay, we die without them, yes or no. So water is one of the basic need of life. We use water for drinking, bathing, cooking, cleaning, washing, yes or no, and so many things, for doing so many things in our daily life, okay children. So 3/4 surface of the earth is covered with water, okay. This is the important point that we have to know, that in our earth, when you see the globe, when you see the map of our world, you see the blue color, okay. So 3/4 surface of the earth is covered with water. उसका 3 भाग, 4 भाग से 3 भाग हमारा जल ही है, पानी ही है, okay. It is covered with water and we get water from various purposes, yes or no. बहुत काम के लिए, हम अपने डेली यूजेस के बहुत काम के लिए, वेरियस पर्पज के लिए वी नीड water only, yes or no, because without water we can't live and without water we cannot do any work. We get water from various sources. Do you know that? Can you tell me what are the sources of water? Yes, rain, lake, river, ponds, sea, yes or no, and the best sources of water is rain only, okay. So we get water from various sources like river, lakes, ponds, streams, oceans, etc. But rain is a major source of water. The underground water also can be used by digging wells. हमको मिट्टी के नीचे से कैसे पानी मिलता है? हम जो बोर खोदाते हैं, yes or no, हम जो कुआं खोदाते हैं, तो ये सब से हमको क्या है, अंडरग्राउंड वाटर हमको, जो कि शुद्ध पानी है, ओके, वो सब मिल जाता है, okay children. The underground water can be used by digging wells. कुआं खोदने के बाद हमको मिलता है. ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स, जो बोर हम खोदते हैं ना
हैंडपम्प, है ना. वी यूज वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है पानी से. Yes or no? So we generate the electricity from the water only. Okay children? Now see water pollution. How the water pollution become? Rain is the purest form of water, but due to our own carelessness, water is getting polluted day by day. Okay, everything for us only. Okay, if you do, see children, it is the means sometimes we are telling that and we are listening that if you do best, then you get best. Okay, if you do bad or worst, then you will get also worst. Yes or no? So what is this? What is the meaning of this? तुम अगर अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा ही मिलेगा, तुम अगर गंदा काम करोगे तो तुमको उसका परिणाम भी गंदा मिलेगा. Yes or no? So that is only rain is the purest form of water, but due to our own carelessness, if you see here children, if you use properly the water, no, then you can get the pure water in time. Yes or no? If you avoid cutting trees, if you plant more and more plants or trees, so you can get rain also in time properly. Yes or no? In proper way. But if you do not this, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? Yes or no? So हम अपने केयरलेस के वजह से ही हम वाटर पोल्यूशन भी करते हैं और एयर पोल्यूशन भी करते हैं. Yes or no? So water is getting polluted day by day for our carelessness only. Okay, because people wash their clothes like this only and throwing in the pond, lake and this thing rivers. Yes or no? And they are washing and they make them bath also to their एनिमल्स. ये सब ना पेट एनिमल्स आल्सो, गाय को भैंस को सबको जाके नहलाते हैं तो वो भी पॉन्ड्स का पानी गंदगी फैलता है. ये सब नो. सो बाथ देयर एनिमल्स आल्सो एंड थ्रो द गार्बेज नियर द वाटर आल्सो. जो कूड़े कचरे रहते हैं ना वो सबको भी लेके पानी में फेंक देते हैं, तालाब में रिवर में फेंक देते हैं, है ना. सो फॉर दैट आल्सो द वाटर पोल्यूशन अक्यूज. एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू कल्चर, डे ideas and of gods and goddess are to be immersed in water after worship at time to time of various festivals. Okay, all these activities make water dirty and unfit for drinking. हम क्या करते हैं बच्चे, जो भी अभी जैसे गणेश पूजा चल रहा है ना, तो गणेश पूजा के जितने भी फूल है, फल है, इतने जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो बिठाते हैं ना गणेश भगवान को, उसके बाद जितने भी कचरा निकलता है ना, जैसे सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ फूल पूरा है ना, इतने दिनों का, वो सब चीज़ को हम क्या करते हैं, दिया, अगरबत्ती, फूल माला, फूल हार, है ना, ये सब चीज़ क्या करते हैं, तालाब में बहा देते हैं. तो इससे क्या होता है, तालाब का पानी और रिवर का पानी जो भी है, नदी का पानी है ना, वो सब गंदगी फैलाता है, तो पोल्यूशन भी कम होता है. ये सब ना पोल्यूशन हो जाता है. सो हिंदू कल्चर में ये सब चीज़ तरह तरह की पूजा होते रहते हैं, है ना, तो उसके कारण भी हम जब वो कूड़े कचरे के लेकर हम रिवर में फेंक देते हैं ना, तो गार्बेज इफ़ यू थ्रो इन दैट दिस थिंग रिवर और पॉन्ड्स, सो दैट आल्सो वन रीज़न टू बिकम अ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. Okay, so children, all these activities make water dirty and unfit for drinking. Okay, और वो ड्रिंकिंग के लिए भी अनफिट हो जाता है. Yes or no? So children, drinking polluted water makes us sick. You know that? है ना, हम जब गंदा पानी पियेंगे तो it make us sick, है ना, हमको ही वो हमारा तबीयत ही खराब होता है. So we should avoid washing clothes, bathing animals near the ponds and rivers. है ना, हमको एनिमल्स को नहलाना नहीं है, हमको गार्बेज को फेंकना नहीं है पानी में. ये सुनो. सो नियर द पॉन्ड्स एंड रिवर्स आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आल्सो शुड नॉट बी इमेज्ड इन द वाटर सोर्सेस. है ना, अभी जैसे गणपति बाबा, दुर्गा मैया, सबको पूजा करते हैं, उसके बाद लेके पानी में बहा देते हैं. सो इसमें जो पेंट होते रहता है मूर्तियों में, है ना, गणेश भगवान का, फिर दुर्गा भगवान का जो उनका जो प्रतिमा है ना, उनके उसमें जो कलर पेंट यूज हो जाए रहता है ना, तो वो सब क्या होता है, पॉइजन हो जाता है, वो सब पानी में मिलके. ये सब नो. सो वो जो पेंट कलर है वो बहुत केमिकल्स है ना, तो वो सब पानी में मिलके वो सब पॉइजन हो जाता है और जहरीला हो जाता है पानी, है ना, वाटर पोल्यूशन हो जाता है. सो इट इज़ नॉट सेफ फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग.
for drinking purpose, yes or no? And so many people are bathing also, yes or no? And their animals also, they are bathing. So these are the not the correct way to use the water. Okay, so we should avoid that. Okay, now we come to soil. Okay, the food that we eat comes from the crops which are grown in the soil. What do you eat, children? We are eating the food. Okay, so without food also we can't live. Okay, every human beings or animals, living things, without food, without air and without water, we cannot live only, yes or no? So the food that we eat comes from the crops which are grown in the soil. जो हम खाते हैं ना, ever you thought where it comes from? The food, where it comes from? कहाँ से आता है? कहाँ grown होता है? मिट्टी में. Okay, soil में only. So it is the also a very important natural resources. Okay, soil also a very important natural resources. The topmost layer of the earth forms soil. सोइल किसको बोलते हैं? जो हमारे अर्थ में जो सबसे ऊपर का लेयर है, परत है, उसको हम मिट्टी कहते हैं, जो कि हम सॉइल बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म्स सॉइल. ओके, सो इट इज़ फाउंड ब्राउन, ब्लैक एंड रेड कलर. कहीं कहीं वो लाल कलर की मिट्टी पाया जाता है, कहीं कहीं ब्लैक भी है और कहीं कहीं ब्राउन कलर की भी है. सो चिल्ड्रन, द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड द विंड कीप्स ब्रेकिंग द बिग रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. जैसे सन, रेन, बहुत धूप होती है, बहुत बारिश होती है, एंड विंड, बहुत ज़ोर से हवा बहता है, तो ये क्या करता है, उसी के असर से जो बड़ा बड़ा रॉक्स होता है, पत्थर होता है ना, सो वो क्या है, कट हो जाता है स्मॉल पीसेस में. ओके, ब्रेक हो जाती है. सो थस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सॉइल इज फॉर्म्ड. और धीरे 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 वो क्या होता है, मिट्टी में बदल जाता है. ओके, मिट्टी बन जाता है. एंड इट कंटेन्स वाटर, एयर एंड रिमेन्स ऑफ dead animals also. Okay, it contains water, air and remains of dead animals. Means जो मिट्टी में मिल जाते हैं dead animals, है ना, and air को and water को, ये सब मिल के वो सब क्या है, मेल्ट हो जाता है और वो मिट्टी में मिल के वो मिट्टी में ही मिट्टी बन जाता है. ओके, सो सॉइल फॉर्म. हाउ द सॉइल फॉर्म? So over a period of time the soil is formed. It contains water, air and remains of dead animals. Okay children, so these are the things about the soil which we have read now. Okay, so now we have read in this chapter what are the natural resources and how they occurred. Okay, how they made by their own and how should we take care of the natural resources, because we can't get again and again some resources, yes or no? So air, water, sunlight, soil, these are the, and food also. Okay, these are the natural resources and we should take care of that. Okay, we should use properly in a proper way, because if it will become dirty then it will be harmful for us only and our health also. Okay children, so these are the things which we read in this lesson. So you also read carefully. Okay, you also read properly what are the uses of water, air and soil, and what are the measures to control the air pollution, water pollution and soil pollution. Okay children, so we can keep the soil also fertile, yes or no? So we cannot throw here and there the garbage also, and we cannot throw the garbage in the water also. Okay, so we should take care of our environment and that is our duty. Okay, so children, in next class I will come with the exercise. Okay, in next class I will give the exercise also. So children, till that time you read carefully, understand what is the lesson. Okay, till that time, thank you, goodbye.